कभी गैस, कभी बदहजमी, कभी पेट फूलना। पेट का दुश्मन बन गया था खाना। आपके पेट के फिट रहने के लिए जरूरी है 7 पाचन केंद्रों का ठीक से काम करना। पेश है झंडू पंचारिष्ट। इसकी 35 जड़ी बूटियों की शक्ति आपके 7 पाचन केंद्रों को मजबूत बनाए। ये अन्य दवाइयों की तरह ऊपरी इलाज नहीं बल्कि जड़ से इलाज करता है। दिलाई गैस, एसिडिटी, बदहजमी, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज से आराम। पेट से हुई दोस्ती, अब जो दिल करे खाओ। झंडू पंचारिष्ट, रखे पेट को हमेशा हैप्पी। मैं या तुम, मैं या तुम। लगभग 2 में से 1 महिला को आफ्टर 30s हो सकती है लो बोन डेंसिटी। तो क्या वो एक आप तो नहीं? लो बोन डेंसिटी से बोन्स कमजोर हो सकती हैं। आज से विमेंस हॉर्लिक्स विद कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसलिए मैंने चुना विमेंस हॉर्लिक्स। और अब मैं विमेंस हॉर्लिक्स, स्टे स्ट्रॉन्ग। वो उन्हें पलकों पे तो बिठा सकती है, पर अफसोस बाहों में उठा नहीं सकती। काश माँ ने समय रहते कैल्शियम लेना शुरू किया होता। 30 के बाद हड्डियां कैल्शियम खोने लगती हैं, जिसके लिए रोज चाहिए 2.5 ग्लास दूध जितना कैल्शियम, जो खाने से शायद ना मिले। तभी डॉक्टर ने सुझाए नए ऑस्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट्स, जिसका कैल्शियम और विटामिन D3 बोन्स को रखे हेल्दी। नया ऑस्टो कैल्शियम प्लस, हेल्दी बोन्स का साथी। कोरोना वायरस खांसने, छींकने और सांस छोड़ते समय निकलने वाली इन्फेक्शन की बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इन्फेक्शन वाले व्यक्ति के संपर्क में आने या इन्फेक्शन वाली वस्तुएं जैसे दरवाजे के हैंडल और लिफ्ट के बटन छूने से ये इन्फेक्शन फैलता है। इसलिए सामाजिक दूरी बनाने से इसके इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों जैसे सार्वजनिक परिवहन, मॉल एवं थिएटर में ना जाकर इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है। इसके फैलाव को रोकने के लिए एक दूसरे से बात करते समय उचित दूरी रखना जरूरी है। भारत सरकार मॉल, स्कूल एवं कॉलेज को बंद करके, कार्यक्रमों को स्थगित करके और कॉरपोरेट घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की प्रथा का उपयोग करके भीड़ भाड़ को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए इन उपायों का पालन करें। सबसे महत्वपूर्ण, घर पर रहें और यदि संभव हो तो भीड़ भाड़ से बचने के लिए घर से ही काम करें। मीटिंग करने के बजाय टेलीफोन या वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करें। गपशप या पार्टी के लिए ग्रुप में इकट्ठे ना हो। यदि घर पर खाना मंगा रहे हैं तो डिलीवरी मैन को खाने का सामान अपने दरवाजे पर ही रखने के लिए कहें। गैर जरूरी यात्रा मत करें। जब भी आप जरूरी सामान लेने के लिए बाजार जाते हैं या बैंक जाते हैं, वहां पर किसी अन्य व्यक्ति से कम 3 फीट की दूरी बनाए रखें। किसी से ना हाथ मिलाएं और ना ही गले लगे, केवल नमस्ते करें। यदि आपने पिछले 14 दिनों में विदेश यात्रा की है तो आपको एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग करवाकर बाहर आना है और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले 14 दिनों के लिए स्वयं को घर में एकांतवास में रखना है। यदि आप पिछले 14 दिनों में किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यदि कुछ लक्षण जैसे खांसी, जुकाम या बुखार है तो किसी भी सार्वजनिक स्थान और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। लिफ्ट इस्तेमाल करते समय क्षमता के अनुसार एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें। आइए इस महामारी को रोकने के लिए सामाजिक दूरी की आदत बनाएं और इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने में मदद करें। COVID-19 is the short name for the disease known as novel coronavirus disease 2019. Coronaviruses are a large group of similar viruses. Some are known to infect humans, such as SARS-CoV and MERS-CoV. The one that causes COVID-19 is called SARS-CoV-2. All coronaviruses are named for the crown-like spikes that cover their surface,
called spike or S proteins. Inside the virus, genetic material called RNA is made up of genes. Genes carry the information to make more copies of the virus. The virus can infect you if it enters your mouth, nose, or lungs. Inside your body, the S protein of the virus locks to a receptor on the surface of one of your cells. This can trigger the virus to enter the cell in a couple of ways. It may cause the virus to fuse with the cell surface, then release its genes into the cell. Or the cell may pull the virus inside by enclosing it in a sac. Once inside, the virus can fuse to the sac and release its genes. Next, the genes use a structure in your cell called a ribosome to make new copies of the virus. The new viruses travel to the surface of the cell. There, they leave to infect more cells. In the meantime, viral S proteins left on the surface of the infected cell can cause it to fuse with nearby healthy cells, forming a giant cell. This may be another way for the virus to spread between cells. People may be infected with COVID-19 for 2 to 14 days before symptoms appear. The 3 main symptoms of COVID-19 are a fever, cough, and shortness of breath. Other symptoms may include tiredness, body aches, stuffy nose, sore throat, diarrhea and vomiting, loss of appetite, and loss of smell. Most people have a mild illness and can recover at home. Some people who have the virus may not get sick at all or may show no symptoms. But if you have trouble breathing or any other symptoms that are severe, call your doctor or the emergency room. They will tell you what to do. For most people who have the virus, the risk for serious illness is thought to be low. People 65 years and older may have a higher risk for serious illness. And people of any age may be at high risk if they have underlying conditions, such as chronic lung disease or asthma, serious heart conditions, diabetes, severe obesity, chronic kidney disease, and liver disease. High-risk groups also include people with a weakened immune system, including those on certain medications, such as corticosteroids, people in cancer treatment, and those with HIV or AIDS. Even if you aren't in a high-risk group, it's important to practice social distancing, which means keeping at least 2 meters or 6 feet between you and other people. This helps prevent infections and serious illness in others as well as yourself. For up-to-date information about COVID-19 and other ways to prevent its spread, visit the CDC website at cdc.gov/coronavirus/2019-NCOV. Viruses. They're everywhere. They come in different sizes and shapes, yet all are very small. How small? Well, if a person was the size of a flu virus, they and almost half of the world's human population could fit on top of a pencil eraser. Yep, that's pretty small. Even when we get a good look at viruses, they are tricky to peg. They mutate and evolve at different speeds. Viruses have to replicate quickly and spread to as many host cells as possible before your immune system stops them. And spreading between hosts is pretty easy. It happens a lot of ways. The most common, good old-fashioned sternutation, or sneezing. Like it or not, many of us ingest and inhale millions of viruses every day. Usually we're fine, but sometimes we get sick. Take, for example, influenza. The flu virus, covered in little spikes, travels towards a host cell. These spikes attach to the receptors on the cell's surface. Once latched on, the virus is granted entry through the cell's membrane. The virus wastes no time releasing its genetic material into the cell. This hijacks the cell's reproductive system, forcing it to make millions of virus copies,
that leave the cell and spread to other parts of the host. To take command of a cell, the virus needs to be strong, but not so strong as to damage the cell's ability to function. It's a delicate dance for the constantly mutating virus. There's always a chance that a random mutation may help it survive. So our bodies put up a defense, which is aided by vaccines. The virus mutations require new flu vaccines to be developed every year. But researchers seek to develop a universal vaccine for better protection against all strains of flu. Still, vaccines that catch the virus at its source are difficult to develop. So keeping the flu bug at bay rests in our preferably washed hands. Keeping healthy and going to the doctor when sick is key. And when it comes to sneezing, remember, it's all in the elbow. No, seriously, it is. Put it in the elbow. May I help you? That doesn't look good. Well, when you have a severe sore throat, you need Strepsils Extra. Look, Strepsils Extra has a powerful triple action. It fights infection, starts working in 5 minutes, and gives relief for up to 2 hours. Bye-bye sore throat. Whoa! Stop a severe sore throat. Take Strepsils Extra.